Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with the briefing in the beginning again. When you people are joining on as a long case, so in the morning when you will be at the exam situation, they will be allocating you the cases. Usually the cases are brought from some of the hospitals nearby. So if you are appearing in Islamabad, most of the patients come from PIMS and Institute of Psychiatry. And if you are giving exam in Karachi, then most of the patients come from PNS Shifa. Some of the patients come from JPMC, some patients from here and there, but majority from these two institutions. And the idea, I always discourage people from going and seeing the patients earlier in these institutes. The reason being कि अगर आप पेशेंट को पहले से जानते हो तो एग्जामिनर जब आपके साथ बैठे हुए आपको असेस कर रहे होते हैं तो उनको भी अंदाजा हो जाता है कि ये पेशेंट प्रॉब्ली कैंडिडेट ने देखा हुआ है. So it's always recommended that you should get a patient who is not known to you or you haven't seen him, so that at least you are trying to elicit the patient's signs and symptoms the way it should be in a natural flow. The main reason why this exercise is done to see 3-4 things in the beginning. One, your interaction with the patient, your rapport building, how you are trying to talk to the person, in which language you are trying to talk. And then once you are having a good rapport, eliciting the signs, eliciting the symptoms, making a diagnosis, making a management plan, this is what the target is. Target is not to again criticize you that you haven't asked any question, but the target is that you should not miss a cue which is given by the patient. So your observation, your communication, and your history taking should be in a way that you have worked in psychiatry for 4 years. And then, of course, you are given 15 minutes to write down a formulation or the summary of the case, ideally a formulation, but if not possible, then summary. Again, the idea is that you should be able to see the major aspects in the management of the patient. If you know the predisposing factors, maintaining factors, and you know the personality of the patient, you know the background, it is good to then manage the patient appropriately. Even if he's suffering from schizophrenia, these things do matter. So that is the idea. Then whatever is the diagnosis, when you are telling the treatment strategies to the examiner, they want to make sure that you are going for a holistic approach, which includes the biopsychosocial model. So you should be mentioning about the management strategy, not only the medication that is needed, but also the psychological intervention and the social intervention that is required. So this is the comprehensive presentation. Again, I absolutely agree, and examiners know this as well, that the 45 minutes are too less with the patient. And most of the time in 45 minutes, these things cannot be completed. But this never means that in 45 minutes, you have to do everything. In 45 minutes, you are supposed to make sure that you have covered the major areas which are needed for managing a patient. If the few things are missing by the end of the presentation, presenting your formulation, you can always say that these were few of the areas that needs to be highlighted, more information is required, inpatient admission to psychiatry is required, the psychological assessment is required, or some social intervention or evaluation is required. So those deficiencies which you have missed in your 45 minutes interaction with the patient, you compensate them in next 15 minutes
when you are preparing your formulation. So by that time, examiner know that you have assessed these things. These were the missing situations that you have mentioned in your formulation. And then 15 minutes question answers. The examiner again try to elicit if you have missed something, you would be able to cover that or not. So this is the idea of whole of the exercise. So you are not given the marks for or passed or failed on the basis of the diagnosis. And there is number of occasions in the exam situation when the candidate was not able to establish a diagnosis, or whatever they have established was different than what examiner thought it to be. But the discussion, formulation, question answer session compensates for that. You have to justify and give appropriate rationale for the outcome, whatever you want to do. So this always keeps in your mind that don't panic if you have missed the diagnosis. So बाहर आने के बाद if somebody else says to you, तुम्हारे पास वो पेशेंट था, ओ उसको तो स्किज़ोफ्रेनिया था, और आपने अंदर उसका डायग्नोसिस बाइपोलर बनाया, इससे आपके पास फेल होने का कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर आपने अंदर बाइपोलर डायग्नोसिस बनाया पेशेंट का और आपने उसको जस्टिफाई किया, उसको रैशनलाइज किया, और उसमें जो इतने भी लकूनास मिसिंग थे उनको आपने इनकॉर्पोरेट किया, तो आपका डायग्नोसिस एक्सेप्ट किया जाता है और उसको प्रॉपरली आगे लेकर चला जाता है। उसी के बेसिस पे आपसे फिर क्वेश्चंस आंसर होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, इट्स नॉट एक्चुअली your only making a diagnosis. It's also your communication, your interaction, your rapport building, the way you formulate the questions. और ये सारी चीजें जो भी अच्छे डिपार्टमेंट्स में साइकाइट्री में काम कर रहे होते हैं लोग, कैंडिडेट्स, उनको ग्रेजुअली 4 इयर्स टाइम में हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप रेजिडेंसी प्रोग्राम में आते हैं 4 सालों में, तो आप केसेस प्रेजेंट करें, उनको अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट करें जैसे एग्जाम में प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि आपको ग्रेजुअली वो तरीका अंडरस्टैंड करें कि एक्चुअल साइकाइट्रिक प्रैक्टिस में भी यही होता है और होना चाहिए। सो वो जो पॉलीफार्मेसी का रिवाज हमारे यहाँ स्टैब्लिश हो जाता है बाद में जब लोग FCPS कर लेते हैं, उसकी वाहिद रीजन ये होती है कि वो अपने आप को फ्लेक्सिबल अप्रोप्रिएट मोड में लेकर नहीं आते। सो आपको ओपन माइंडेड के साथ पेशेंट को देखना है, उसकी सारे फेसेट्स को एलिसिट करना है, डायग्नोसिस के साथ साथ उसका बैकग्राउंड, उसकी पर्सनालिटी, उसकी पास्ट ट्रीटमेंट, हर चीज को इनकॉर्पोरेट करना है। और कोशिश ये करनी है कि मोनोथेरेपी फॉर अ सिंगल डायग्नोसिस along with psychological treatment and social intervention should always be incorporated. तो एग्जामिनर आपको एक सेफ साइकाइट्रिस्ट के तौर पे फ्यूचर में देखना चाहते हैं, ना कि उन साइकाइट्रिस्ट के तौर पे देखना चाहते हैं जो पेशेंट के साथ 2 मिनट बात करते हैं, एक जनरल अपना इंप्रेशन क्रिएट करते हैं और दवाइयां लिख के दे देते हैं। जनरल इंप्रेशंस आम तौर पे गलत भी हो जाते हैं। सो अक्सर मेरे साथ बहुत दफ़ा ये हो चुका है कि बड़े बड़े साइकाइट्रिस्ट बैठे हुए हैं, पेशेंट एंटर हुआ और उसको देखा और कहा इसको तो स्किज़ोफ्रेनिया है, बट अगर आपने किसी से बात नहीं की, उससे इंटरेक्ट नहीं किया, उसकी हिस्ट्री नहीं ली, उसका मेंटल स्टेट नहीं किया, उसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं ली, तो अगर आपका डायग्नोसिस ठीक भी है कि वो स्किज़ोफ्रेनिया ही है, इवन देन उसकी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी अप्रोप्रिएट नहीं होगी जब तक आप मरीज का सारा बैकग्राउंड नहीं जानेंगे। ये उसी तरह है कि कोई मुझे देखते साथ ही कह दे कि डॉक्टर नासिर तो बड़ा स्टबर्न और खर दिमाग आदमी है। सो अगेन, इंप्रेशन पढ़ने में और एक्चुअल चीज होने में फर्क है। सो वी ऑलवेज ट्राई टू एनकरेज पीपल टू मेक देयर rational decisions on the basis of assessments, not on the basis of impression कि उनको ये पता है कि जी ये डॉक्टर नासिर की तरफ से मरीज आया है, उन्होंने डायग्नोसिस का स्किज़ोफ्रेनिया बनाया है, तो ये स्किज़ोफ्रेनिया ही होगा और उसी लाइन पे आप ट्रीट करते रहे। नो,
अनफॉर्चुनेटली स्किज़ोफ्रेनिया क्रॉनिक एलिमेंट है, पेशेंट्स एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते हैं, लेकिन इसमें अगेन फिर ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप पेशेंट की असेसमेंट ना करें। सो एग्जाम का आइडिया और थीम ये है कि आपकी असेसमेंट पेशेंट के साथ ऐसी हो कि उसकी फ्यूचर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्लियर हो। दैट इज द थीम। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे, अगेन इवन आप कुछ चीजें मिस करेंगे 45 मिनट्स में, इट्स एक्सेप्टेबल इफ यू विल बी एबल टू जस्टिफाई देम in your summary and formulation. Even then, if you miss something, we are all human beings, और साइकाइट्री में कोई चीज हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल पत्थर पे लकीर नहीं होती, बहुत सारी चीजें स्लिपरी होती हैं कि पेशेंट ने इंफॉर्मेशन नहीं दी या आपको कोई इंटरेक्शन में बातचीत नहीं पता चली, तो फिर जब एग्जामिनर क्वेश्चन आंसर करता है वहां पे एक जस्टिफिकेशन स्टैब्लिश की जाए। सो अगर पहले आधा घंटा आपका एग्जामिनर के साथ अच्छा नहीं हुआ, I can hear anything. You cannot hear anything? Who cannot hear me? Anybody? Okay. जो यहाँ पे हैं लोग, who is that? जो जिनको आवाज नहीं आ रही. Okay. I don't know who is, some guest user is not able to hear me. Check it out. आप लोगों को आवाज आ रही है बाकियों को? क्यों मानो? Yes, sir. Ari. Okay. So it means कि आपके फिर connection में कोई problem है, just check it out. If other people can hear me, just leave out and come back again. Hopefully you'll be able to hear. So the basic theme again, please understand कि अगर आपका first encounter with the patient अच्छा नहीं हुआ, पेशेंट म्यूट था, पेशेंट साइकोटिक था, पेशेंट मैनिक था, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, आप संभालने की कोशिश कर रहे थे 45 मिनट्स में, और फिर भी आपको इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिली नहीं मिली, डजंट मेक्स अ डिफरेंस। आपको रैशनलाइज करना है अगले 15 मिनट में कि जो 45 मिनट आपने मरीज के साथ गुजारे उसमें जो जो आपने किया उसके बेसिस पे आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं, प्रोविजनल डायग्नोसिस, क्या डिफरेंशियल्स आप डायग्नोसिस रखेंगे, और उन कंक्लूसिव डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, वर्किंग डायग्नोसिस के ऊपर आप मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एटियोलॉजी डिस्कस करेंगे, और फिर आप उसके रिलेटेड सारे फैक्ट्स, और फिर भी एग्जामिनर को अगर कोई मसला होगा तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे। सो ये बात जहन में रखें, समटाइम्स एग्जाम में मैनिक पेशेंट है और मीनिया वाला पेशेंट से फ्लाइट ऑफ आइडियाज उसको हो रही है, आप बार बार उसको कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अच्छा हम ये बात करते हैं लेकिन आप पहले मुझे ये बता दें, आप ये बता दें, ये कैसे हुआ, और वो पेशेंट जो है वो आपके नहीं कंट्रोल में आ रहा। आपकी कंसिस्टेंसी, आपका तहम्मुल, आपका बर्दाश्त, आपका पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करने में कोई फ्रस्ट्रेशन का इजहार ना करना और एलिसिट करते चले जाना जो भी साइन सिम्टम्स हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन गिविंग अ कंक्लूसिव एविडेंस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ bipolar mania or mania, whatever you want to call it. So that is important. And last, what I want to repeat again is कि प्लीज आप ICD-11 को डायग्नोसिस के तौर पे यूज करें, प्रैक्टिस यही करें कि आप ICD-11 के बेसिस पे डायग्नोसिस बोलें और उसको जस्टिफाई करें। ये रीसेंट है, अपडेटेड है, एक्सेप्टेबल है, और अच्छी बात यह है कि जाहिर है अभी एग्जामिनर्स के लिए भी नई है, सो अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो बचने के चांसेस एग्जिस्ट करेंगे। ICD-10 आप यूज करते हैं, मेरे जैसे बुजुर्ग एग्जामिनर, उनको अगर ICD-10 रटी हुई है तो उसमें वो आपको पकड़ने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे। सो कोशिश करें ऐसा ना करें। सो मेरे आगे भी ICD-11 बोलें, और ICD-11 में कुछ चीज़ें आप जो भी बोल सकते हैं बोलें। हाँ, एग्जामिनर को उस पर एतराज़ है, वो क्वेश्चन करेगा, जस्टिफाई करेगा, रैशनलाइज करेगा, और अगर वो रैशनलाइज हो जाता है और आप प्रूफ कर देते हैं, दैट इज इट। So establishing a concrete diagnosis is not essential. Making sure that everything you want to assess with the patient is important. And then your moving forward with it is more important, right? So this is what the theme is.
उसी के बेसिस पे. So अब so the first candidate Tuba, do you want to present? Yes, sir. I am here. Good, good. फिर कहूँगा घबराना नहीं है. This is just a practice. और आई नो दैट कि ये एग्जैक्ट वो प्रैक्टिस नहीं है जो एग्ज़ाम वाली है. कोशिश करो एग्ज़ाम वाली प्रेजेंटेशंस के साथ ही चलो. 45 minutes with the patient, then 15 minutes for writing, and then presenting to me, and then I'll be going forward with it. Go ahead, I'm listening. Tuba, should I ask you the background? Your background. Yes, sir. I have completed my residency in Civil Hospital, Karachi. Good. Okay. Go ahead. अब आराम से रिलैक्स होके प्रेजेंट करना. ओके, गो अहेड. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay. The patient assigned to me is 19 years old male, Mr. H, single student of BSCS, priorly resident of Multan, currently shifted to Karachi. Brought to psychiatric OPD via family with complaints of excessive talking, irritable mood, restlessness, decreased sleep, belief that he has special powers, and suspiciousness for 1 to 2 months. According to patient, he was in his usual state of health 1 to 2 months back and gradually started talking excessively as pointed out to him by his family members. He started believing that he is exceptionally talented and has special powers by which he can free the country from all criminals. His mood was remained irritable during this time and he had frequent fights with family members. His sleep was decreased, goal directed activities increased, including excessive social media use, and he made his own YouTube channel and uploaded his favorite songs on it. Gradually, he also developed suspiciousness that agency people were chasing him because of his special powers. His occupational and social functioning has been disrupted. No physical acts of violence reported, only verbal aggression. No suicidal and homicidal thoughts, no thought insertion, withdrawal, broadcast, and ideas of being controlled. No perceptual abnormalities, no history of head injury, fever, fits prior to onset of illness. There were family conflicts going on preceding to onset of patient's illness regarding his engagement and marriage in exchange marriage, vate satte ki shaadi. But the patient denied of uh, that marriage. For above mentioned symptoms, family took him to a psychiatric facility in Multan where he was admitted for 5 days and received oral as well as injectable psychotropic medication. Patient does not remember name of the medicines. There is no history of ECT. He showed improvement on medicines and is currently taking those medicines. Reason for current OPD consultation was that family has been shifted from Multan to Karachi recently. No past psychiatric history, including any episode of depression. In family, parents alive and healthy. Parents' marriage was contentious. Father works in Pakistan Navy. Mother is housewife. Four sisters, and he's the only brother. Third in order among siblings. More attached to his mother and one of her elder sisters. Priorly, they used to live in joint family with grandparents and married uncles. But due to frequent fights in between the family, they have recently separated, and now living in nuclear family system. There is no known family history of psychiatric illness. Birth history, milestones, unremarkable. He was good in study. Physical beating reported in childhood by father, as he was a naughty child. There is reported use of cigarette 2 to 3 per day. But patient denied use of cannabis and other psychoactive substances. But although I would like to explore further, in premorbid personality, patient's predominant mood used to remain euthymic. He was an extrovert. He had many friends, including superficial and close friends. Friendships are stable. On MSc, young male of clean built, average height, well kept, wearing pant shirt, sitting comfortably on chair, cooperative, rapport established. His speech was relevant, coherent, increased in amount, circumstantiality as well as flight of ideas present. Mood was euthymic subjectively and objectively.
Thoughts include delusion of grandiosity, delusion of persecution, as well as overvalued ideas. He thinks that his family members has probably done magic on him. Perception denied hallucinations in any sensory modality. In cognition, it was oriented to time, place, and person. Other cognitive functions were not formally assessed. Insight is absent. General physical examination was unremarkable. My differential diagnosis in my provisional diagnosis in bipolar disorder, first manic episode with psychotic features. Second, I have kept mental and behavioral disorder secondary to substance, although I have not found the exact evidence. But I am going ahead like points in favor and against. I'll explain it further. On in points in favor of manic episode is increased talkativeness, delusion of grandiosity, energy and goal-directed activity, flight of ideas, irritable mood decrease, disruption in occupational and psychosocial functioning. But uh, points which are against include there is no family history, um, and there is delusion of persecution and irritable rather than elated. Mental and points in favor of mental and behavioral disorders tended to substance. There is history of cigarette smoking, and I would like to explore further. There is no family history which they were put further bipolar disorder, and the patient's remorbid personality include that he was extrovert. There is a possibility that he can participate in substance. In etiology, patient there is in predisposing factors. There is history of physical abuse, beating in childhood. Irritating is family conflicts going on थोड़ा regarding the patient. पर थोड़ा सा नजदीक Uh, होके बोलें आवाज आपकी मफल हो रही प्लीज ओके गो अहेड एशियोलॉजी predisposing history of physical abuse, beating in childhood, and as he used to live in joint family system, so there were frequent fights. There used to remain frequent fights between family. Precipitating factors. There was family conflicts going on regarding patients' exchange marriage over this शादी वाला event that precipitated. In perpetuating, I would further like to take collateral account for assessing possible factors that are contributing to this illness. In management, I would like to send CBC, UC, LFTs, urine DR with drug abuse panel. I would like to apply Young Mania writing system. In social, I would like further take collateral account, families further exploration. Uh, in treatment, I would like to check his record of medicines on which he has responded and can continue. And otherwise, I can start him on antipsychotic medication, tablet olanzapine, and we can start from 5 milligram and can go to 10, 15, and according to his response. And but in long term, I would like to consider mood stabilizer for in psychological intervention, supportive psychotherapy. I would like to engage patient in supportive psychotherapy as well as family therapy and personal therapy and family psychoeducation. We can work on patient stress coping skills and avoiding use of psychoactive substances and maintaining patient regular routines, keep weighted schedule. Prognosis, the short-term prognosis seems good as patient has consulted early psychiatrist and he is responding to treatment there is no family history of psychiatric illness and he is adherent on medicines. And on long term, we can involve his family in therapy and uh, it can enhance further stress coping skills. So long term prognosis also seems favorable. that's it are you Yes. done with it okay good so
when you say a patient who was treated with antipsychotics for a few days, diagnosed case of bipolar, currently mania, and this is how you are trying to elicit, right? So the flow is absolutely okay, presentation is fine. Now, certain questions that I want to clarify from you. You said no suicidal or homicidal ideation, and mood was irritable. Have you heard of dysphoric mania? No, sir. Tuba, have you heard of dysphoric mania? I have read and heard about mixed affective episodes, but not the dysphoria. सॉरी आवाज आपकी नहीं आ रही मुझे सही ओके I have अब I have read about mixed affective episodes, but not dysphoric mania. सो डिस्फोरिक मेनिया की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है इन मेनिया में इरिटेबल मूड होना अनयूजुअल बात नहीं है और आप उसको डिस्फोरिक मेनिया या मेनिया बोल सकते हैं मूड डिस्फोरिक है इरिटेबल है एंग्री है सो दैट कम्स इन इट सो इट कैन बी जस्टिफाइड second when the patient is presenting to you, he is having the symptoms, delusions of grandiosity. What kind of delusions? Are they delusions of identity or they are any other kind of delusions? The grandiosity. Ability. He said Okay. that it Ability, delusions of grandiosity of ability in nature, right? yes, sir. And this is a short history. Do you consider the diagnosis of schizophrenia as patient is at the age कितनी एज थी पेशेंट की 19. 19 so इस एज में सबसे कॉमनली स्किज़ोफ्रेनिया की प्रेजेंटेशन होती है which in the beginning could be presenting with manic like symptoms as well. Would you consider as one of the differentials of schizophrenia? Yes, yes, sir. I kept it on 3, but I didn't say it. Because उसमें तुबा points in favor में बोलना मेरे है पास कम थे, that's why. तुबा बोलना है एविडेंस है या नहीं है पहला आपने मेनिया बनाया जस्टिफाई दूसरा आपने सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोटिक एपिसोड बनाया या मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर सेकेंडरी टू सब्सटेंस अब्यूज एब्सोल्युटली एग्री थर्ड पे आप स्किज़ोफ्रेनिया को रखें क्योंकि 19 इयर्स की एज में है फर्स्ट प्रेजेंटेशन है आपके पास एविडेंस नहीं है बट आप उसको डिफरेंशियल के तौर पे रखेंगे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है अच्छा अब इससे आगे कि यूजुअली पेशेंट वहां पे भी 5 दिन रहा उसको कुछ एंटीसाइकोटिक मिली अब यहाँ पे भी वो इन पेशेंट साइकाइट्री में एडमिटेड है Sir, at that day he presented to OPD. ओके आप अगर इसको बाइपोलर डिसऑर्डर करंटली मेनिया बोल रहे हैं तो आप मूड स्टेबलाइजर को अपने ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी में शामिल करेंगे Yes, sir. I would like to consider mood stabilizer. ओके और आपके ख्याल में अगर इसको मूड स्टेबलाइजर देना हो तो कौन सा दिया जा सकता है We can start him on lithium okay and or sodium valproate. how much lithium would you like to give to him Sir, we will start from 400 milligram, and and we can according to lithium serum lithium levels. so you Increase, can push it up to increase. how much Sir, according to serum lithium levels, we can go like 400 to 800, and then further up to 1200. so lithium levels कहाँ पे maintain करोगे किस जगह पे Sorry, sir, ये I missed. ये पेशेंट एक्यूटली प्रेजेंट हुआ एक्यूट मेनिया है ठीक है आप लिथियम स्टार्ट करते हैं उसको ग्रेजुअली बिल्डअप करते हैं 2 हफ्ते बाद सपोजिटली लिथियम के लेवल्स आपको 0.8 मिलीमोल्स पर लीटर पे आ जाते हैं 800 मिलीग्राम पर डे पे क्या आप इस पे ही रखना चाहेंगे या एक्यूट मेनिया के लिए
उसको मजीद पुशअप करेंगे या मेंटेनेंस के लिए उसको नीचे ले आएंगे? यस सर, acute mania में we can go, हम ज्यादा पे भी जा सकते हैं दोस्त। गुड। सो एक्यूट मेनिया में हम लेवल्स ज्यादा रखेंगे, मेंटेनेंस फेज में हम लेवल्स को मॉडरेट लेवल पे रखेंगे, और अगर हमें प्रोफाइलैक्टिकली देना है तो लोअर लेवल्स पे भी पेशेंट चल सकता है, राइट? ड्रग स्क्रीनिंग के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे इस पेशेंट के ऊपर? So we can perform urine DR with drug abuse panels आता है, urine गुड, toxicology। गुड। सो यूरिन फॉर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करवा लेंगे, उसमें आमतौर पे 12-14 ड्रग्स हैं वो असेस हो जाती हैं, और अगर सब्सटेंस अब्यूज की का एविडेंस कोई मिलता है तो डायग्नोसिस को ऑल्टर कर देंगे, राइट? अब आखिरी सवाल, क्या कोई रेटिंग स्केल्स इस पेशेंट के ऊपर एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं? तो कोई रेटिंग स्केल इस पेशेंट पे एडमिनिस्टर किया जा सकता है? ओके, सो उनकी आवाज आई। यंग मेनिया रेटिंग स्केल असेसमेंट के बिगिनिंग में दिया जा सकता है टू असेस द सेवेरिटी ऑफ द सिम्टम्स, और 3 हफ्ते बाद फिर रिपीट किया जा सकता है देखने के लिए कि इंटेंसिटी ऑफ सेवेरिटी ऑफ द सिम्टम्स विद द ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज वर्कअप कर रहे हैं कि नहीं। दिस इज वन। बाकी आपने प्रोग्नोसिस वगैरह बता दिया, सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, राइट? गुड, दिस इज एब्सोल्युटली ओके। अगेन थोड़ा सा दो रिकमेंडेशंस जो मैं आपको करूंगा। आपका स्टार्ट बहुत सुपर्ब होता है, आप बहुत अच्छी एनर्जी और विगर के साथ प्रेजेंटेशन शुरू करती हैं, लेकिन ग्रेजुअली आपकी प्रेजेंटेशन में डिक्लाइन, आपकी आवाज़ में कमी और फोर्स में कमी आ जाती है। कोशिश करो आखिरी जो 5 मिनट बोलते हो उसको भी उतनी ही इंटेंसिटी से बोलो जितना बिगिनिंग में बोलते हो। कोई ज़रूरत नहीं है उसको ग्रेजुअली नीचे लाने की। सो उस ग्राफ को मेंटेन करें, यू विल बी परफेक्टली फाइन। आखिरी 10 मिनट में अगर आपकी प्रेजेंटेशन में ग्राफ में स्लोनेस आती चली जाएगी तो फिर एग्जाम में एग्जामिनर जो है ना वो उसको भी फीलिंग होगी कि शायद ये लड़की इंटरेस्टेड नहीं रही या बता नहीं पा रही या इसको आता नहीं है, जबकि मुझे यकीन है कि आपको सब कुछ आता है और आप बता भी ठीक रही हैं, लेकिन आपका उसमें एनर्जी लेवल कम हो जाता है। सो उसको ज़रा थोड़ा सा ऊपर रखें, यू विल बी परफेक्टली फाइन इन द एग्जाम। गॉट इट? यस सर, बीच में मेरा थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन का इशू हो रहा था, नेटवर्क का, शायद मेरी आवाज। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में ये भी मसला होता है, लेकिन अपनी एनर्जी कम मत होने दो। अपनी एनर्जी को सस्टेन रखो जैसे शुरू में रखते हो। इतना अच्छा प्रेजेंटेशन शुरू करने के बाद आखिरी 5 मिनट में कमजोर नहीं पड़ना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो उसको सस्टेन करो, उसको विगरसली लेकर चलो, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह थिंग्स विल बी ओके। बेस्ट ऑफ लक इन योर एग्जाम। अगर मौका लगा, टाइम हुआ, एक पेशेंट और तैयार करो, फिर प्रेजेंट करो, फिर देख लेंगे, ठीक है? हु इज द नेक्स्ट पर्सन? बख्तावर, इज शी हियर? अस्सलाम वालेकुम सर। यस सर। वालेकुम अस्सलाम। बख्तावर बेटा कहाँ से हो? सर फ्रॉम हैदराबाद से। हैदराबाद सिंध। यस सर। जमील की ट्रेनी हो कि मोइन अंसारी साहब की? सर डॉक्टर मोइन अंसारी। वेरी गुड, ओके। चलो, पेशेंट देख लिया? यस सर। अच्छा, अभी मैं फिर वही कहूंगा जो मैं तूबा को कह रहा था, अपनी एनर्जीज को इस दिन, एग्जाम वाले दिन के लिए सेव करके अपनी टोन, अपनी विगर, अपनी एनर्जी साथ रखो। आप सब ने साइकाइट्री में 4 साल काम किया हुआ है, आपको सब कुछ पता है, सिवाय इसके कि उसका इजहार कैसे करना है वो एक प्रॉब्लम है।
और इस प्रैक्टिस का मकसद वही है कि आपका जो एक्सप्रेशन है, द वे यू टॉक इन द एग्जाम शुड बी एक्चुअली रिवाइटलाइज्ड, ताकि उसमें कोई ब्रेक ना आए। गॉट इट? Yes, sir. अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि 45 मिनट्स आपने पेशेंट के साथ गुजारे हैं। अब आप 15 मिनट्स में तैयारी करके मेरे पास आए हैं अपनी फॉर्मुलेशन या समरी प्रेजेंट करने के लिए, राइट? Okay, sir. वैसे जस्ट बिटवीन यू एंड मी, पेशेंट के साथ कितना टाइम गुजारा था? सर 1.25 घंटा गुजारा था। उसको कम करो, उसको Yes, 45 मिनट्स पे लेकर आओ yes, sir. एग्जाम से पहले पहले। क्योंकि फिर एग्जाम में पता है क्या होता है कि एग्जाम में घंटी बोलती है ट्रर कि ये पेशेंट आपसे ले लिया जाएगा, और फिर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। उस पैनिक सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए इसकी प्रैक्टिस कर लो, लाइक यहां पर ही आपको 45 मिनट्स मरीज के साथ गुजारने, 1.25 घंटा नहीं गुजारना। नो मैटर जो Yes, मर्जी हो जाए, 45 मिनट में पेशेंट छोड़ दो। जहां भी पहुंचे हो वहां पे रोक दो, ताकि एग्जाम में फिर एकदम पैनिक ना करना। बिल्कुल पैनिक ना करना। 45 मिनट्स में बेल बजेगी, छोड़ देना। जितना तैयार हुआ हुआ है उसी पे फॉर्मुलेशन बिल्डअप करना, और अपने लूप होल्स को और जो एरियाज कवर नहीं किए उनको उन 15 मिनट में कवर करने की कोशिश करना। ओके, yes, sir. चलो शुरू हो जाओ। शाबाश, आई एम लिसनिंग। Okay. A 20 years old single girl, Amna, educated to the class 4th, was brought via psychiatric emergency voluntarily by his father against the complaints of over-talkativeness, decreased sleep, and restlessness for last 3 months. My patient believes that his relatives have done taweez on her to make her insane, so as she could not marry their son, with whom the patient is in love. She also says that that they want to dominate on her, and that's why she is not feeling well. She further reported that she possessed some special powers of knowing each and every person from their bottom, though she doesn't say them anything on their faces. She says that she is deeply in love with her cousin and often has thoughts of sleeping with him. However, the parents of his cousin will not agree to his marriage, and hence she has asked his father to take her to the hospital, where the doctor will decide whom she should marry. The account of her father revealed that she developed high-grade fever around 3 months back, with rigors and chills, which appear to be the predisposing factor towards her illness. The precipitating event appears to be the sudden fake news of the death of her mother, which she received while she herself was suffering from high-grade fever. After which, she suddenly started talking excessively and appeared happy like never before. Her sleep and appetite decreased, and she stated sexually disinhibited talk, and all this hampered her functionality markedly in social and occupational domains. The maintaining factors appears to be the ongoing fever, due to which the patient was discharged from the psychiatric facility without any psychotropics, so as she could complete her appropriate anti-malarial cover first. There is no history of suicide, homicide, head trauma, or epilepsy. Her past medical and surgical history is unremarkable. Family history reveals that there are 7 siblings and she's fourth in the birth order. Parents are alive and healthy, and there is no history of psychiatric illness in the family. Personal history reveals that she was born by normal vaginal delivery at hospital and achieved all developmental milestones at appropriate age. She went to the school at the age of 5 and studied till class 5th, after which she was sent to madrasa like her elder siblings. Relationship history revealed that she is engaged to her cousin and was about to get married to him. Drug and forensic history is unremarkable. Pre-morbid personality showed the traits of extraversion. She is extremely religious and has healthy coping strategies. Her characteristic trait is submissiveness. On general physical examination, she was vitally stable. However, she was markedly anemic with no signs of clubbing, cholonicia, jaundice, or pedal edema. The systemic examination was unremarkable. Mental state examination revealed that she is a young girl of average height and thin build, sitting comfortably on chair, conscious, cooperative, and well oriented to time, place, and person. She was dressed appropriately according to gender, culture, and weather, and making the eye contact and maintaining it, and rapport was established with ease.
His speech was more inclusive of details with the flight of ideas and over familiarity. Mood was elated. Hallucinations could not be elicited. However, persecutory and grandiose type of illusions were elicited, which were though fleeting. Cognitive functions were intact and insight was lacking. Based on history and mental state examination, my first differential diagnosis is organic manic disorder or post malaria complication. The second differential diagnosis include bipolar affective disorder, currently mania with the psychotic features, and third is schizophrenia. Points favoring the organic manic disorder it include as the symptoms developed during the symptoms developed during the patient was having the high grade fever. So there is some sort of the temporal relationship. Points favoring the bipolar affective disorder include the presence of elated mood, persecutory and grandiose delusions, sexual disinhibition, presence of flight of ideas, and increased psychomotor activity. Mhm. Points favoring the schizophrenia it include the duration of the illness, presence of delusions and hallucinations, and functional impairment. Mhm. Management will be done on the basis of biopsychosocial model. Biologically, I go for the routine lab investigations first, like CBC, LFTs, creatinine एक मिनट electrolytes. बेटा, एक मिनट. What is your conclusive diagnosis on which the management strategy you are formulating? It is a bipolar affective disorder, currently Okay, mania with psychotic fine, features. fine. Go ahead, go ahead. Biologically, I'll go for the labs, which include CPC, LFTs, creatinine electrolytes, along with the neuroimaging studies like CT scan and MRI to see any structural deficits. Mhm. Defects. Pharmacologically, I'll go for the antipsychotic medication first or mood stabilizer after discussing it with the patient and the carer. Mhm. Psychologically, I'll apply the scales like PPRS and Young Mania Rating Scale for the rating of psychotic and manic symptoms. And socially, I'll advise cognitive behavioral therapy, interpersonal and social rhythm therapy, and psychoeducation. Mhm. The short-term prognosis it appears to be good because of their early approach to psychiatric facility, good pre-morbid adjustment and social support and presence of the social support. Long-term Mhm. prognosis, however, seems to be worse because of the early age of onset and chronic nature of the illness. Mhm. हो गया. Yes, sir. गुड. ओके, आज मीनिया का दिन है, सारे मैंने के इकट्ठे कर लिए. ओके. ओके, सो absolutely good, fine presentation. Flow was okay. Your presentation style is fine. You covered most of the things. You never missed anything. कुछ छोटी मोटी ट्रिकी चीजें थोड़ा सा मैं पूछूंगा, पूछ लूं? Yes, sir. तुम स्क्रीन पे हो कहाँ? टीए पे हो? Sorry? तो स्क्रीन पे किस जगह पे हो? तुम्हारा साइन क्या है? क्यों Sir, बेटा? B हाँ, A बी B ए, A. Sir. Yes, sir. बी एच. Okay, I don't know. I could not see you. Anyways, that's okay. So basically, when you made a diagnosis of bipolar disorders and you talked about the precipitating factor as fever, so onset started with the febrile illness. Will you consider encephalitis and post-encephalitic sequelae in this patient? Yes, sir. ओके. अगर आप इसको हम एमआरआई करवाते हैं और उसमें फाइंडिंग्स पोस्ट एनकेफेलिटिक आ जाती हैं, आई एम अज्यूमिंग, आई एम नॉट सेइंग कि हैं या नहीं, Mhm. तो will you be able to treat on the same lines or will you change some management strategies? I think I'll go in touch with the liaison, and then probably I'll need to change some of the my treatment strategies. कैसे? Post encephalitic absolute presentation of psychosis, no fever now, right? और encephalitis में treatment strategy कैसे बदलेगी जबकि encephalitis settle down हो चुका है या हो गया है या हो रहा है, तो If it has changes been कैसे होंगे? down and if it has been settled down and there are just solely the psychiatric complaints, then I think I'll go with the same line of his management.
Okay. Okay. So if a person is suffering from, say, मैनिक लाइक सिम्टम्स जो आपने डायग्नोसिस बनाया अभी कि फर्स्ट आप उसको ऑर्गेनिक बेसिस पे ट्रीट कर रहे हैं और एंसेफलाइटिस के साथ प्रेजेंटेशन की, तो एंसेफलाइटिस में ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी सिवाय इसके कि अगर एक्यूट फॉर्म है तो आप एंसेफलाइटिस की ट्रीटमेंट के लिए कुछ देते हैं, बाकी मेंटल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स को तो शायद एंटीसाइकोटिक के साथ ही ट्रीट करना पड़े। प्रोग्नोसिस आउटकम और बाकी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन करंट स्टेट मैनेजमेंट की शायद चेंज ना हो। ओके, आपने बोला कि उसको एक सडन न्यूज़ मिली डेथ ऑफ द मदर की ड्यूरिंग द फेब्राइल इलनेस, बिकॉज पेशेंट का बैकग्राउंड जो आप बता रहे हैं प्रॉब्ली विलेज से है और उनको ये लगा कि इसको बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है, सो वी डोंट नो कि हमारे पास एविडेंस भी नहीं है कि बुखार चढ़ा या नहीं चढ़ा। माँ के मरने की खबर किसने दी और क्यों दी? Actually, while she was having fever, her family members were also suffering from fever, low grade fever. But suddenly, her mother developed high grade fever, and she was taken to the hospital. At which time, she herself was also suffering from the fever. But when the family members came back, one of her cousins said that your mother has been brought on, in like she has been brought in lab. Someone said him like that way. So she assumed maybe my mother has passed away, and she immediately got out from the bed and taking out all of her blankets, and she said that my mother has passed away and like that. But later she realized that it was a fake news. But after a while, or her father said that on the next day, she started talking excessively, and all the other complaints started. So you have all the details of that event, right? Yes, sir. Good, very good. Okay. Now, if you want to start a mood stabilizer to this young girl of 20 years age, which mood stabilizer will you prefer and why? I'll prefer the lithium because sodium valproate, she is in a reproductive age. I'll definitely not prescribe with the sodium valproate. And with carbamazepine, there are some, complications that it is an enzyme inducer, and I'll have to take care of the interaction with other drugs as well. So preferably, I'll start with the lithium. But point is, lithium in an unmarried woman, अगर कल को इसकी शादी हो जाती है, जो कि हमारे आमतौर पे इस बैकग्राउंड के लोगों की बड़ी जल्दी शादियां हो जाती हैं, और फिर वो साथ में इस डिल्यूजन में भी है कि उसने किसी लड़के के साथ शादी करना चाहती है जिसमें वो इंटरेस्टेड भी है, फैमिली इंटरेस्टेड नहीं है, तो बेबी होने के चांसेस भी जल्दी के हो जाएंगे जो हमारे बैकग्राउंड्स में होता है। तो विल लिथियम बी सेफ एट दैट एज? No, then I'll obviously, if she's getting married, then I'll have to, counsel her about all of the complications and सो the फिर things. कार्बामेज़ेपिन क्यों नहीं? हॉस्पिटलाइज्ड है, इन पेशेंट में एडमिटेड है, मॉनिटर आप कर सकते हैं। वैल्पोरेट की तो जस्टिफिकेशन मुझे समझ आ गई, आप कह रहे हैं कि जी क्योंकि उससे पॉलीसिस्टिक डिजीज होने के चांसेस हैं, फ्यूचर प्रेगनेंसीज में इशू हो सकता है, शादी हो जाए बच्चा पैदा ना हो, पॉलीसिस्टिक डिजीज डेवलप हो जाए, प्रॉब्लम हो सकती है, एग्री। लेकिन कार्बामेज़ेपिन क्यों नहीं? Because of its interaction with other drugs, and plus it itself is an enzyme हम तो inducer. एंटीसाइकोटिक्स तो शॉर्ट टर्म पे ही देंगे ना, अगर हमारा डायग्नोसिस बाइपोलर है तो लॉन्ग टर्म पे तो सिर्फ कार्बामेज़ेपिन ही चल सकती है। I अच्छा think. चलो, दिस इज वन ऑफ द डिबेट दैट कैन कंटिन्यू। सो ऐसी सिचुएशन में जहां पे एग्जामिनर स्टिक कर जाए किसी बात पे, वहां पे फौरन से पहले बैकफुट पे आके अपना स्टैंड चेंज कर लेना। Say. द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज कि कभी कभी एग्जामिनर्स की सुई फंस जाती है, जैसे मैं फंसाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है, कि भाई लिथियम आपने कहा जी मैं लिथियम दूंगी, तो लिथियम क्यों दोगी? लिथियम उसकी तो मैरिजेबल एज है, लिथियम तो नहीं देनी चाहिए। और वैल्पोरेट की आपने जस्टिफिकेशन दे दी कि मैं नहीं दूंगी, तो मैं कार्बामेज़ीन पे अड़ गया। इसी सिचुएशन में फॉरन बैकफुट पे आ जाना, कहना जी दिस देयर आर अदर पॉसिबिलिटीज एज वेल टू प्रिस्क्राइब अदर मूड स्टेबलाइजर्स एज वेल, generally considering the overall situation. Yes, carbamazepine, if she's hospitalized, I can push it up. It is an enzyme inducer, but over the period of time, I can stabilize her on 4 to 600 milligrams per day of carbamazepine. If she stays in the hospital, monitor the liver function test and other associated situations, and then continue with it. वापस आ जाना, फंसना ना, रुकना ना।
You got my point? Yes, sir. जब एग्जामिनर ने आपके साथ जंग का ऐलान किया है तो उसमें एग्जामिनर की जंग में जीत हो जाएगी। सो उसको जीतने ना देने का आसान तरीका ये है कि फौरन से पहले अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लें, सही। एग्जामिनर की इंक्लिनेशन के साथ फ्लो कर जाएं, अनलेस और अनटिल यू हैव अ वेरी सॉलिड स्टैंड कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, और मैं अक्सर ये एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ कैंडिडेट्स अड़ जाते हैं, एग्जामिनर्स को रैशनलाइज करते हैं, एविडेंस देते हैं, मुख्तलिफ पेपर्स कोट करते हैं, तो फिर एग्जामिनर चुप कर जाता है। लेकिन ज्यादातर सिचुएशन में एग्जामिनर इस किस्म की सिचुएशन में अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग का इजहार भी कर रहे होते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है, जब एग्जामिनर ने एक दफा कहा आप नहीं माने, दूसरी दफा कहा आप नहीं माने, तो तीसरी दफा एग्जामिनर तंग पड़ जाएगा। उसको तंग मत होने दें। उसने एक दफा कहा है, आपने जस्टिफिकेशन दी कि नहीं मैं नहीं करूंगी, तो दूसरी दफा अगर उसने कहा है तो फिर अपना बैकफुट पे आके स्टैंड चेंज कर लो। सही। ओके? यस सर। हाँ, चाहे अगर तुम नहीं भी एग्री करते ना दिल से जो एग्जामिनर कह रहा है, फिर भी स्टैंड चेंज कर लेना और फिर कहना जी देयर आर अदर सेफ अदर मूड स्टेबलाइजर एज वेल, इफ आई रियली हैव टू कंटिन्यू विद इट for a longer period of time, then I will consider lamotrigine as well, which is safe in women, safe in pregnancy, safe in bipolar disorders, but acute manic episode may usually it is not recommended. However, if she will be able to afford, I can start her on lamotrigine, build it up to 150 to 200 milligrams per day and see in the longer run as well. So there are other options available. Lamotrigine hai, then of course levetiracetam का बहुत कम evidence है, but लेमोट्रोजीन का एविडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो दी जा सकती है। आजकल लकोसामाइड जो है वो भी मूड स्टेबलाइजर के तौर पे यूज़ होती है, टोपिरामेट को भी मूड स्टेबलाइजर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इन सब के अपने अपने फ़ायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं, लेकिन आपको इंक्लिनेशन एग्जामिनर की देख के फाइनल कंक्लूड करना है। सही। क्लियर है? यस सर। शाबाश। और बख्तावर, आखिरी सवाल, रेटिंग स्केल में बीपीआरएस का कहा, बीपीआरएस स्टैंड्स फॉर ब्रीफ साइकेट्रिक रेटिंग स्केल। और व्हाट इज द कट ऑफ पॉइंट? कोई बात नहीं, ये फंसाने वाले सवाल है। जब कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो एग्जामिनर उसको आखिर में फंसाते हैं, इससे घबराना नहीं है। इसके बेसिस पे वो फेल नहीं करेगा, इससे ये अंदाज़ा होता है कि वो आपको नंबर बहुत अच्छे देना चाहता है। जब ये कट ऑफ वैल्यूज़ और इस तरह की बातें शुरू हो जाए ना, तो समझो वो आगे जाना चाह रहा है, या रीसेंट एडवांसेस की वो बात शुरू कर दें तो मीन्स के वो आपसे आपको चाहते हैं कि वो नंबर अच्छे दें। सो देख लेना, ये जितने भी रेटिंग स्केल एग्जाम में बोलोगे उसके कट ऑफ वैल्यूज पता होनी चाहिए कि जी उसमें इतने सवाल हैं, ये उसकी वैल्यू है, इतना हो तो ये डायग्नोसिस कंफर्म होता है, थिंग्स लाइक दैट। सो जस्ट गो फॉर इट। गुड, वेरी गुड, नाइस प्रेजेंटेशन। किसी ने हाथ उठाया हुआ है कि उसने सवाल पूछना है? आई हैव अ क्वेश्चन सर, काइंडली अलाउ मी एट द एंड ऑफ द सेशन। गो अहेड, आस्क द क्वेश्चन। सर आई आल्सो हैड अ क्वेश्चन। गो अहेड, पूछो। मतलब एग्जाम में हमें जो है वो अटेंडेंट मिलता है साथ में, या वी जस्ट गेट द पेशेंट ओनली? ओके, इसमें वेरिएबल है सिचुएशन। आइडियली स्पीकिंग अटेंडेंट नहीं मिलता, ठीक है, खाली पेशेंट होता है। हाँ, अगर कुछ सिचुएशन में जो आपके साथ फैमिली मेंबर इसलिए बिठा दिया जा सकता है, जैसे 20 साल की लड़की है, डिसएबिलिटेड है, तो फिर शायद आप फैमिली मेंबर एक साथ बैठ जाए अगर अनमैनेजेबल है। यूजुअली नहीं दिया जाता, ठीक है। सो इसलिए उस पर डिपेंड ना करना ज्यादा। तो मतलब फिर ऑनवर्ड्स जो भी हम आप लोग केस सब बना अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें कोशिश करो बगैर इन्फॉर्मेंट के केस तैयार करो। सही। एग्जाम में पॉसिबिलिटी कि आपको इन्फॉर्मेंट या केयर प्रोवाइडर दिया जाए कम है पॉसिबिलिटी, ज्यादा इंफॉर्मेशन पेशेंट से ही लेनी पड़ेगी। और इसी की प्रैक्टिस करो कि सिर्फ पेशेंट से 45 मिनट्स बात करो।
अगर खाली पेशेंट से 45 मिनट्स बात करोगे ज्यादा प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में इंफॉर्मेंट मिले। 90% सिचुएशन में इंफॉर्मेंट अवेलेबल नहीं होता। सर जी सर मेरा एक सवाल Thank you है so much. आपसे कि इत्तेफाक से अभी जो 2-3 लॉन्ग केसेस हमने प्रिपेयर किए वो इस तरह के थे कि सबसे ज्यादा फेवर में जो पॉइंट्स थे वो स्किज़ोफ्रेनिया था या डिप्रेशन था, लेकिन उन सब की इलनेस दैट वाज स्टार्टेड आफ्टर सम फीवर, एक पेशेंट की सिम्टम्स स्टार्टेड आफ्टर हेड सर्जरी, तो ऑर्गेनिसिटी तीनों में मिल रही थी। अब जब हम डिफरेंशियल्स बनाते हैं तो वो 3 डिफरेंशियल्स भी हमें आसानी से मिल रहे थे। एक में हमें सब्सटेंस यूज की हिस्ट्री भी मिल रही थी, स्किज़ोफ्रेनिया के भी पॉजिटिव पॉइंट्स मिल रहे थे और ऑर्गेनिसिटी भी मिल रही थी। तो अब उस ऑर्गेनिसिटी को हम सबसे पहले रखें या थर्ड पे रखें, इसमें हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होता। ICD-10 ICD-11, अब ICD-11 क्या कहता है? सबसे ऊपर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, फिर ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीजेज हैं, फिर साइकाइट्रिक मॉर्बिडिटी है। अगर आपको एविडेंस फेवर में जाता है कहीं से भी, फीवर की हिस्ट्री है, कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री है, सर्जरी की हिस्ट्री है, कोई भी ऐसी, ऑर्गेनिक विल कम फर्स्ट। हाँ, आप कहेंगे माय वर्किंग डायग्नोसिस या माय करंट वर्किंग डायग्नोसिस इज बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, currently mania. However, I will first rule out the possibility of my first differential diagnosis before intervention in this patient. So पहला डायग्नोसिस आपका, अगर किसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ADHD है, ऑटिज्म है, वो पहला डायग्नोसिस है। और ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है, वो पहला डायग्नोसिस है। उसके बाद मेनिया है, उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया, उसके बाद कुछ और है। लेकिन और उसमें स्टार्ट भी आपको ऐसे ही कर, माय differential diagnosis include organic brain syndrome या organic mental and behavioral symptoms secondary to some febrile illness या organicity, whatever you want to call it. And then my second diagnosis is bipolar mania, bipolar affective disorder, currently mania. My working diagnosis is bipolar affective disorder, currently mania. However, first I will rule out the possibilities by getting a scan, MRI, or neurological examination or detailed neurological assessment. एग्जामिनर को आमतौर पे ये चीज़ पसंद नहीं कि मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेज दूंगा। ज़्यादातर एग्जामिनर कहते हैं जी आप किस मर्ज की दवाएं, पहले आप खुद ऑर्गेनिसिटी रूल आउट करें, बाद में हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजें। अगर आपको पॉजिटिव न्यूरोलॉजिकल साइंस मिलते हैं तो वो न्यूरोलॉजी का पेशेंट है। अगर आपको न्यूरोलॉजिकल साइंस नहीं मिलते, आप डॉक्टर हैं, MBBS आपने किया हुआ है और आपको मेडिसिन को पढ़ाया गया है, पहले आप रूल आउट करें, डायग्नोसिस स्टैब्लिश करें, फिर न्यूरोलॉजिस्ट की हेल्प लें और वहां भेजें, फिर आपका काम खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है, हम कहते हैं कि पहले न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लो, उसके बाद फिर हम साइकाइट्रिक डायग्नोसिस करेंगे। नो, डोंट डू दैट। फर्स्ट यू एग्जामिन द पेशेंट, you assess the organicity, you rule out the possibility। अगर आपको फाइंडिंग्स नहीं मिल रही कि इस वक्त ना न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे कोई डेफिसिट है, ना सॉफ्ट न्यूरोलॉजिकल साइन है, ना कोई लोब डिसफंक्शन है, ना फीवर है, ना सिम्टम्स हैं, तो फिर भी मैं एहतियातन I will go for an MRI examination just in case, and if that comes out to be clear, my working diagnosis will be bipolar affective disorder, currently mania, or my working diagnosis will be schizophrenia. Ideally speaking, schizophrenia should be again number 3 and 4th should be bipolar, currently mania. लेकिन अगर एविडेंस आपको बाइपोलर का ज्यादा मिल रहा है, शॉर्ट हिस्ट्री है, 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की, स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस तभी होगा जब महीने से ज्यादा की हिस्ट्री होगी। उससे पहले तो आप स्किज़ोफ्रेनिया बोल ही नहीं सकते। 6 महीने की हिस्ट्री होगी DSM-5 के हिसाब से, 3 महीने की हिस्ट्री होगी तो फिर स्किज़ोफ्रेनिया बनेगा। उससे पहले तो आप एक्यूट साइकोटिक एपिसोड पे आ जाएंगे, एक और कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएगी। सो बाइपोलर मेनिया इज अ सेफ थिंग इस करंट सिचुएशन में, और वही वर्किंग डायग्नोसिस पे रखें। जवाब क्लियर हुआ? मैं लंबा बोल जी गया। सर। ओके, ज्यादा लंबा बोल जाता हूँ
फिर मैं खुद भी कंफ्यूज होता हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं। जी ज़ैनब बताओ, यू वर आस्किंग समथिंग। जी सर। जी सर। अपने अपने हाथ नीचे कर दो, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। एक और किसी ने सवाल पूछना था। सर एक सवाल पूछना था। श्योर श्योर, गो अहेड। सर ये पेशेंट की, हम सब्सटेंस अब्यूज का पेशेंट है, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी के सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो फॉर्मुलेशन में हम लिखेंगे द पेशेंट डिनाइज एनी सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी। अगर सब्सटेंस अब्यूज का पेशेंट है और आप डायग्नोसिस ही सब्सटेंस अब्यूज का बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप लिखेंगे नो एक्टिव साइकाइट्रिक, नो एक्टिव अदर साइकाइट्रिक मॉर्बिडिटी एलिसिटेड। उसमें मैं ये लफ्ज बोलता हूँ, लेकिन आप ये भी बोल सकते हैं कि आई हैव रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, ब्ला ब्ला। इसके बदले मैं सारे को नक्शल में कर देता हूँ कि दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सब्सटेंस अब्यूज एंड सब्सटेंस मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर सेकेंडरी टू सब्सटेंस अब्यूज. I have ruled out the possibility of primary psychiatric morbidity, and there is no active psychiatric morbidity at this point in time. So, वो psychiatric morbidity means primary psychiatric disorder, depression, anxiety, bipolar, schiz वगैरह. So, मैं उसको जरा शॉर्ट कर देता हूँ, लेकिन आपके केस में दोनों तरह सही है. आप इंडिविजुअली बोल दें कि मैंने रूल आउट किया और सब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सब्सटेंस अब्यूज के बेसिस पे मैं ट्रीटमेंट करूंगा, इनिशिएट. Bilal, you want to ask a question? Go ahead. म्यूट किया, अनम्यूट कर दिया, फिर म्यूट हो गए. सो आई कैन नॉट हियर यू. जी सर. सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलो. सर एक क्वेश्चन मैं काफ़ी भी दफ़ा पूछ चुका हूँ अपने सुपरवाइजर से, पर कोई इसका मुझे वो ऐसा जवाब नहीं मिल रहा है. एक पेशेंट है, वो कैनिबस यूज़ कर रहा है, तो हमने ये पढ़ा है कि कैनिबस अगर क्रॉनिक यूज़र है तो 28 डेज तक यूरिन में पॉजिटिव रह सकती है, और अगर कि वो क्रॉनिक यूज़र नहीं है तो 3 to 4 डेज उसके मतलब प्रेजेंट होती है यूरिन प्रोडक्ट पैनल में. अब जैसे मेरे पास एक पेशेंट आता है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का, और उसकी हिस्ट्री है कैनिबस यूज़ की, तो पर अभी के टेम्पोरल रिलेशन नहीं बन रहा है, वो 2 मंथ पहले क्विट कर चुका है कैनिबस यूज़. अब मैं जब डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाऊंगा तो मैं क्या उसमें लिखूंगा कि वन ऑफ द डिफरेंशियल के मेंटल बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू कैनिबस यूज़? बिल्कुल आप लिखेंगे. उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज पे आप लेकर जा सकते हैं. एक पॉसिबिलिटी बोलने की ये है कि एज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज बिफोर द ऑनसेट ऑफ द इलनेस, हाउएवर आई वाज नॉट एबल, सेम इसी तरह बोलो, आई वाज नॉट एबल टू एस्टैब्लिश अ टेम्पोरल रिलेशनशिप between the current psychiatric presentation and substance abuse, so there is some doubts about it. My current working diagnosis will be bipolar affective disorder. However, I will keep the possibility of substance use disorder. लेकिन इसमें मैं दो चीजें और बताऊं. सब्सटेंस अब्यूज की बड़ी अजीब सी कहानी होती है. कुछ पेशेंट में ये प्रेसिपिटेंट है, पहले सब्सटेंस अब्यूज आया, साइकाइट्रिक मॉर्बिडिटी बन गई. कुछ साइकाइट्रिक मॉर्बिडिटी है, सब्सटेंस अब्यूज बाद में शुरू हो गया. बहुत सारे साइकोटिक पेशेंट्स हमारे ये करते हैं. कुछ ये भी होता है कि पेशेंट एपिसोडिकली सब्सटेंस अब्यूज करता है, लेकिन साइकाइट्रिक मॉर्बिडिटी स्टैब्लिश नहीं होती, और किसी वक्त एकदम सडनली साइकाइट्रिक मॉर्बिडिटी आ जाती है. और भी कुछ टेम्पोरल रिलेशनशिप है. ये मेरी एक अलग से प्रेजेंटेशन थी जिसमें मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया था कि सब्सटेंस अब्यूज की वेरियस साइकाइट्रिक मॉर्बिडिटीज में क्या. आपके पास जो करंट एविडेंस सबसे स्ट्रॉन्ग है, आप उसको एक्सप्लेन करें और करंट वर्किंग डायग्नोसिस को उस पे लेकर चलें. सो अगर पेशेंट को आपने ढूंढा और आपको टेम्पोरल रिलेशनशिप नहीं मिल रहा, और पेशेंट ने 2 महीने पहले छोड़ दिया, फिर भी उसको साइकोटिक सिम्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आप यही बोलें कि सब्सटेंस अब्यूज की हिस्ट्री है, मैंने उसको रूल आउट करने की कोशिश की है, कोई टेम्पोरल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो रहा, इसलिए मेरा करंट वर्किंग डायग्नोसिस बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंटली मेनिया है. हाउएवर, आई विल कीप द पॉसिबिलिटी of substance abuse and mental and behavioral disorders secondary to substance abuse. Does this makes absolute sense? इसमें आप क्लियर कट ठक 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 नहीं कर सकते
साइकाइट्री में एक ये भी हिकअप है। लेकिन अगर आपको पता है और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और उस पर डिस्कशन भी हो करके आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। थैंक यू सर। यूर वेलकम। अस्सलाम और कोई क्वेश्चन? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Sir, I am Dr. Farah from Multan. I have a question. गो अहेड। हाँ जी सर, मैंने अभी रिसेंटली कंसेक्टिव डेज में दो ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, फीमेल्स। सॉरी, एक मेल था, एक फीमेल थी। सर, उनकी प्रीवियस जो रिकॉर्ड था और प्रीवियस जो उनकी हिस्ट्री थी वो टोटल मतलब मैनिक एपिसोड्स की ही थी, एपिसोडिक थी। उसमें पूरा मैनिक का क्राइटेरिया फुलफिल्ड हो रहा था। और आज फीमेल देखी है, उसमें अब जो करंट पहले 2 एपिसोड मेनिया की रह चुकी हैं और अब जो करंट एपिसोड थी वो पोस्टपार्टम ऑनसेट के साथ थी। 2 वीक आफ्टर डिलीवरी उनमें स्टार्ट हुई है। लेकिन सर उनमें ये चीज़ आ रही थी और हमारे पास विदाउट एनी ट्रीटमेंट वो प्रेजेंट हुई थी। सर उनमें मूड उनका इलेटेड था। इसके अलावा वो बहुत चेयरफुल थी, कंटिन्यूअसली स्माइल्स पास कर रही थी, फ्रैंक थी, इवन कि उन्होंने कहा कि मुझे चाय भी पिलाओ। और उनके साथ वाली सब फीमेल्स ने पर्दा किया हुआ था लेकिन वो ओपनली बैठी थी। और इसके अलावा वो कह रही थी कि मेरे इनमें एनर्जी भी बहुत है, लेकिन मेनिया का जो और पर्टिनेंट फैक्टर्स हैं वो फुलफिल नहीं कर रही थी। लेकिन उनमें इम्पोर्टेंट बात ये आ रही थी कि सर उनमें ग्रॉस लूजनिंग थी। मतलब इतनी ज़्यादा लूजनिंग थी कि टोटल इररेलेवेंट टॉक थी, न्यूरोजिज्म आ रहा था उनमें। और वो इवन कि मुझे मिस आइडेंटिफाई कर रही थी। वो कह रही थी कि 2 महीने की जो मेरी बच्ची है वो एकदम से इतनी बड़ी हो गई है। मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन मांगी कि आप मुझे अपनी बेटी क्यों कह रही हैं? तो उनके हाथ पे एक तिल था, तो कहती मेरे हाथ पे एक मोल है, आपके हाथ पे भी मोल है, तो इस वजह से आप मेरी बेटी हैं। तो सर मतलब उनसे बात ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि टोटल इररेलेवेंट टॉक थी, टोटल उनकी लूजनिंग थी, मुझे डिरेलमेंट थी। एक बेटा जबकि बात बताओ, एक मिनट, मुझे एक बात बताओ। पहली बात तो ये कि that is a proven fact that people who are having psychiatric morbidity, women who have a psychiatric morbidity are more prone to suffer from postpartum illnesses. पहली चीज, so just remember that. People who have 2 episodes of mania in the past or bipolar diagnosis in the past and then they were in remission, in the postpartum situation, they will definitely have more possibility of a relapse if they are not treated appropriately on a maintenance medication. ये तो फैक्ट एक है। दूसरा, पोस्टपार्टम में 3 किस्म का पोस्टपार्टम डायग्नोसिस हो सकता है। कौन कौन सा? सर अफेक्टिव एंड साइकोटिक। अफेक्टिव में मैनिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं, मिक्स सिम्टम हो सकते हैं और डिप्रेसिव सिम्टम होते हैं। साइकोसिस जो है वो एक अफेक्टिव, पहले पोस्टपार्टम ब्लूज होते हैं, ठीक है, और एंजाइटी या सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम्स आ सकते हैं। फिर अफेक्टिव कंपोनेंट हो सकता है जिसमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों का एलिमेंट हो सकता है, और फिर स्किज़ोफ्रेनिया लाइक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो पोस्टपार्टम में तीनों चीजें पॉसिबल है। अब ये पेशेंट जब आप कह रहे हैं कि उसको लूजनिंग भी थी, वो डिलूजनल भी थी और पोस्टपार्टम एविडेंस था, मेनिया मिल नहीं रहा था, इलेशन थी, ग्रैंडियोसिटी नहीं मिली, ठीक है, ना ग्रैंडियोसिटी मिली ना फ्लाइट मिला, सर्कमस्टेंशियलिटी मिल रही है, लूजनिंग मिल रही है, और साथ में डिलूजनल है, तो ये तो पोस्टपार्टम स्किज़ोफ्रेनिया लाइक सिम्टम्स हो गए ना। ठीक है, उसी के बेस पे ट्रीट कर दोगे, इसमें मुश्किल क्या है? सर मतलब अगर पहले ऑनसेट बाइपोलर इलनेस का है और अब पोस्टपार्टम के पोस्टपार्टम साथ है। ऑनसेट जो है, पोस्टपार्टम ऑनसेट तीनों चीजों में पॉसिबल है। इफेक्टिव ब्लूज, इफेक्टिव साइकोसिस। अगर साइकोसिस है, स्किज़ोफ्रेनिया फॉर्म है, तो आप उसको एंटीसाइकोटिक से ट्रीट करेंगे। जब वो ठीक हो जाएगी एंटीसाइकोटिक्स, फिर आपको स्टैब्लिश करना है कि इसको बाइपोलर मूड स्टेबलाइजर पे रख के लॉन्ग टर्म चलाएं, ठीक है, और देखें कि उसको रिलैप्स ना हो, या उसको एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन पे लॉन्ग टर्म चलाएं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एविडेंस जो आप मुझे बता रही हैं, मैं उसका एक्यूट साइकोटिक एपिसोड को ट्रीट करूंगा जो स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म है, और वो जब सेटल डाउन हो जाएगा पेशेंट, तो मैं उसको मूड स्टेबलाइजर लॉन्ग टर्म दूंगा ताकि उसको जो पास्ट 2 एपिसोड्स हुए
और तीसरा पोस्टमार्टम पे हुआ, उसको मैं एड्रेस कर लूँ। जी सर, ठीक हो गया। Unless or until proven otherwise, which could be a tricky situation. But आपके बताए हुई चीज़ों पे मेरा तो यही पर्सनल व्यू पॉइंट होगा कि मैं ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी डिवाइस करूंगा विद करंट वर्किंग डायग्नोसिस, and my current working diagnosis will be postpartum psychosis. I will treat with antipsychotics. Once she will settle down, in the long term, I will go for a mood stabilizer, preferably a safe mood stabilizer. 2 बच्चे उसने पैदा कर लिए, काफ़ी चांसेस हैं तीसरा भी करेगी और रिलैप्स के चांसेस हैं, कंप्लाइंस के इश्यूज हैं, लॉन्ग टर्म उसने दवाई खाई नहीं, जबकि 2 एपिसोड में तो उसे क्लियरली 5 साल के लिए मूड स्टेबलाइजर लेना चाहिए था, तो फिर मेरी ऑप्शन बदल भी सकती है। गॉट इट? थैंक यू सो मच। एग्जाम थैंक में यू सो मच। सब चीजों को रैशनलाइज करना है, और जिस रैशनलाइजेशन पे एग्जामिनर ना माने, उस पर थोड़ा सा पीछे आके जो वो आपसे मनवाना चाह रहा है, अगर उसका एविडेंस बनता है तो उसके फ्लो को समझो। ये एग्जाम में ट्रिकी सिचुएशन, और ये आपको फॉलो करनी है। एवरीवन क्लियर? ओके, अच्छा, ये एक हाथ अभी भी उठा हुआ है, अगर उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछना तो नीचे कर लें। और किसी और ने कोई प्रेजेंटेशन करनी है कि बस? क्यों मानूर? सर पता नहीं, आप पूछ लें, मुझे इन दो ने ज़्यादा कंफर्म किया था। चलो, ये 2 तो हो गए ना आज के, चलो अच्छी बात है। मेरे पास वैसे आज टाइम था, मैंने कहा था मैं और भी करवा दूंगा, बट इफ वी आर गुड, alhamdulillah, we'll fine with it. If you people will be interested, I will be having some time on Friday, coming Friday. अगर डेट अनाउंस हो गई तब भी ठीक है, नहीं अनाउंस हुई, किसी ने प्रेजेंट करना हुआ मुझे बता देना, और अगर आप लोग नहीं करोगे तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन कर दूंगा। और कोशिश करो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो। आई एम 70 शॉर्ट ऑफ 1000 एंड आई नीड 1000 सब्सक्राइबर टू मूव फॉरवर्ड विद इट। फिर मुझे यही एग्जाम की प्रेपरेशन वगैरह मैं यूट्यूब चैनल पे करूँगा, उसमें ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है, पिक्चर क्वालिटी वगैरह भी अच्छी आ जाती है। ठीक है, सो वो भी देख लेंगे, वॉट एवर सूट्स यू। एनीबडी, एनी अदर क्वेश्चन? No? Okay. Best of luck. Stay focused, stay energetic, and be precise. Don't panic too much. Okay? Take care. See you again soon, inshallah. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़ सर।